Welcome back, students, to Gyanmanjari Vidyapith online education. I hope, students, that you all are fine and safe at your home. Students, this is the unit from our main textbook Flamingo, okay? And the name of this unit is the interview. So, as you know, students, that in this unit, the interview, there are two portions actually. The first part that deals with the information about interview, and the second part that deals with the actual specimen, actual example sample of the interview. So right now we are going through with the second part. Okay, we have already discussed a few portion of the second part, and this is the interview. Mukund is the person who is taking this interview, asking the questions and trying to gather and collect the informations, and Umberto Eco is the personality who is facing this interview and replying the questions. Okay, so students, up to the last lecture we had discussed in this interview, Mukund was asking the several questions that actually that's quite difficult to believe that such kind of personality is there, कि ये जो उम्बर्टो इको है वो ऐसे पर्सनालिटी है कि कोई भी लोग ऐसे बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो वर्सेटाइल पर्सनालिटी है ना, इसलिए ऐसे हमने लास्ट लेक्चर तक ऐसे डिस्कस किया था. एंड उम्बर्टो इको लाफ्स वाइल सेइंग दैट एक्चुअली व्हेन मुकुंद वाज कमिंग, जब उसका इंटरव्यू लेने के लिए वो आ रहे होते हैं, उनके बीच उम्बर्टो इको ने ऑलरेडी वो आर्टिकल है जो वो प्लान करके रखा हुआ है और वो उन्होंने कंप्लीट भी कर रखा है. So up to that portion we had discussed in our last lecture, students. So now we are going to proceed further. Suppose you find any difficulty, any query, then you are free to ask me. Okay, so you can carry your textbook also with you, students. Okay, the interview, the second part. Now Mukund is speaking. Okay, fine. Let's start. Not everyone can do that, of course. Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. It's a marked departure from a regular academic style, which is invariably depersonalized and often dry and boring. Have you consciously adopted an informal approach, or is it something that just came naturally to you? Right now, Mukund is asking because it's quite surprising about Umberto Eco. All the people are not able to do the same. सभी लोग में ऐसी कैपेसिटी नहीं होती है, या तो होती है पर वो अपने आप को ऐसे आउटपुट देने में वो कभी कभी ऐसे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं जैसे उम्बर्टो इको कर रहे हैं. So about his non-fictional work and the work related to academy, it was quite different from rest of the things. Your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. It is a marked departure from a regular academic style, which is invariably depersonalized and often dry and boring. उसका जो ऐसे वर्क है, उसका जो उसने राइटिंग जो लिखा है, सर्टन उसकी जो क्वालिटीज़ है, इट्स क्वाइट पर्सनल. मीन्स उम्बर्टो इको ने अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ जो है वो अपने वर्क में ऐसे ऐड की है. एंड द क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट it is quite different, and sometimes we find that it's dry and boring. So have you consciously adopted an informal approach, or is it something that just came naturally to you? Here actually Mukund is trying to gather the information about the writing skill of Umberto Eco, एंड दैट्स वाई वो ऐसे ट्राई कर रहा है कि उम्बर्टो इको ने ये जो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो जो ऐसे राइटिंग ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, वो सभी नेचुरली है या फिर कोई एफर्ट्स लगा के उन्होंने ऐसे कुछ राइटिंग वगैरह किया है. सो इज ट्राइंग टू गैदर दिस इन्फॉर्मेशन. Okay, now let's see what Umberto Eco replies. When I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, scholars learn a lot of a certain subject. Then they make a lot of false hypotheses. Then they correct them. And at the end, they put the कंक्लूशंस. अभी उम्बर्टो इको जो क्वेश्चन उन्हें पूछा गया है उसका अच्छे से रिप्लाई करते हैं कि ये चीज़ें उनमें नेचुरली है या फिर
कोई एफर्ट्स है या फिर किसी से इंस्पायर होके वो ऐसे राइटिंग वगैरह कर लेते हैं, ये सब क्या है। सो अभी वो उनका रिप्लाई करते हैं कि वो जब गए थे, जब वो इटली में गए थे, तभी बहुत सारे प्रोफेसर्स थे, उनके डॉक्टरल जो वो अपना डॉक्टरेट डिग्री कर रहे थे तब वो इटली में गए थे। सो बहुत सारे प्रोफेसर्स थे, उनमें से एक ने उन्हें ऐसे बोला था, स्कॉलर्स लर्न अ लॉट फ्रॉम अ सर्टेन सब्जेक्ट, कि जो स्कॉलर्स होते हैं ना वो एक सब्जेक्ट से बहुत कुछ सीखते हैं, दे लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट, then they make a lot of false hypotheses. It is not necessary, students, that a person tries to learn, then the person will not make the mistakes. We can take the example of ourselves only. हम अपना खुद का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम कोई मिस्टेक्स वगैरह नहीं करने वाले हैं। ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। सो द सेम थिंग स्टूडेंट्स वी कैन फाइंड हियर विद द स्कॉलर्स ऑल्सो। हम स्कॉलर्स में भी ऐसी सेम थिंग्स जो है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, दैट स्कॉलर्स ऑल्सो मेक द मिस्टेक्स एंड देन दे ट्राई टू करेक्ट दिस मिस्टेक्स। फिर जो होता है कि वो अपनी जो मिस्टेक्स वगैरह होती है उसमें करेक्शन करने की वो कोशिश करते हैं, एंड एट द एंड ऐसे होता है कि वो कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं। मीन्स that is the kind of filtering process, what is the true, what is not the true, what is false, what should be done, what should not be done. So here it is the kind of conclusion कि last में वो ऐसे कोई judgment पर proper ऐसे आ जाते हैं. So it's about the scholars also even. So here he is presenting his experience कि once upon a time ऐसा हुआ था कि जब वो ऐसे डॉक्टरेट कर रहे थे तो तब इटली में ऐसा हुआ था, एक प्रोफेसर ने उनसे ऐसे बोला था, You, on the contrary, told the story of your research, even including your trials and errors. ऐसे बोलता है कि when a scholar is writing these things, even the scholar may present the trials, the errors. We can include all these things also. They even include these things. So this is also the part of creation. जब कोई ऐसे creation करता है, कोई writing वगैरह, तो उसका ये पार्ट है कि वो अपने ट्रायल्स जो है उसे भी इंक्लूड किया होता है, अपना जो एरर्स होता है, मिस्टेक्स होती है, उसे भी ऐसे इंक्लूड किया होता है. He recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it. At that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done. At that point, at the age of 22, students remember that he was at the age of 22 only. वो सिर्फ 22 की एज में ही थे when he could realize at that time that स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन इन दिस वे ऑनली. जिस तरह से उन्होंने स्कॉलरली बुक्स को, मीन्स स्कॉलरली बुक्स मीन्स के अच्छी तरह की क्वालिटी वाली जो स्कॉलरली जो बुक्स होती है वो ऐसे ही रिटर्न होनी चाहिए, वो ऐसे ही लिखी हुई होनी चाहिए जैसे कि उन्होंने किया था. बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, दैट हाउ डिड यू प्रिपेयर ऑल दिस थिंग्स, द स्टोरी बिहाइंड दिस पर्पज एंड ऑल्सो योर जर्नी थ्रू दिस फाइंडिंग आउट दिस रिसर्च एंड ऑल. So this is the basic thing that a scholarly book should be written, and he has also done the same thing. उन्होंने भी ऐसे सेम ही किया हुआ होता है. So this is the great thing. This is why my essays always have a narrative aspect, narration, the kind of story aspect, that is the kind of narration. Okay. So वो भी उसके वो ऐसे बोल रहे हैं हमें कि उनके एसेस में हमेशा ऐसे भी नैरेटिव एस्पेक्ट होता है, बिकॉज ही ऑलवेज ट्राइज टू कन्वे द स्टोरी. वो हमेशा एक स्टोरी बोलने की, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उन्हें वहाँ पे इंक्लूड करने की ट्राई करता है, इसलिए उसमें नैरेटिव एस्पेक्ट भी रहता है. एंड दिस इज़ वाई प्रॉबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव novels so late, at the age of 50 more or less, and that's why he started writing narrative novels at the age of 50. Sometimes he writes more, sometimes he writes less. Okay, students, the next paragraph on the same page. Okay, I remember that my dear friend Roland Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. Right now, students, this the
person, Umberto Eco, is saying that actually he remembers that his friend is there. One friend is there. What's the name of this friend? That is Roland Barthes. He is actually frustrated a lot. Why? Because he was thinking that he is just an essayist, not a novelist. वो उनके जो फ्रेंड थे वो इसलिए फ्रस्ट्रेटेड रहते थे क्योंकि वो ऐसे सोच रहे थे कि वो सिर्फ एक एसेइस्ट है, वो एक नॉवलिस्ट नहीं है. एंड यू नो स्टूडेंट्स, इट रिक्वायर्स more efforts to create the novel. To write the essay and to write the novel, both are quite different things. And to create the novel requires more creativity and the imagination. Somehow we can find the gifted quality also. And that's why his friend Roland Barthes feels frustrated. इसलिए वो ऐसे frustrated feel करते हैं क्योंकि वो creative writer नहीं थे ना, इसलिए वो नॉवलिस्ट नहीं थे, वो सिर्फ एसेइस्ट ही थे और इसीलिए वो ज़्यादातर फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे. ही वांटेड टू डू creative writing one day or another, but he died before he could do so. Actually, he was willing to compose the novel, he was willing to write the novel, and it was his too much wish, but actually he died before he could do anything else regarding novel. He died, so it was a dream, it remained dream only, it couldn't be fulfilled because he died. That's why वो उसका जो सपना था वो सपना ही रह जाता है, यहाँ पर वो कंप्लीट नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है. फिर इसलिए I never felt, Umberto Eco is speaking the statement, students, I never felt this kind of frustration. I started writing novels by accident. Here actually this personality, this very much well-known personality, Umberto Eco, he is speaking that actually he didn't try to write novel with particular efforts. Actually it was quite natural with him, and even we can say rather that it was by accident. It was not planned, we mean to say. यहाँ पे राइटर ऐसे कन्वे करना चाहते हैं कि उसने जो ऐसे नॉवेल्स लिखना स्टार्ट किया था वो बाय एक्सीडेंट था, वो उन्होंने प्लानिंग नहीं कर रखी थी कि ओके चलो अब से मैं नॉवल लिखने की स्टार्टिंग कर रहा हूँ वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे कुछ भी नहीं था, वो बाय एक्सीडेंट ही हुआ था, नेचुरली हुआ था. आई हैड नथिंग टू डू one day and so I started. Novels probably satisfied my taste for narration. One day he thought of writing and finally he started. And because of novel writing, students, you know, the taste, actually the taste for narration was there for this writer Umberto Eco, and this taste was finally satisfied probably. ये जो Umberto Eco है उनके लिए narration का अपना एक taste है, so वो अच्छी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है नॉवल राइटिंग की वजह से. उनका जो नरेशन का जो टेस्ट होता है वो अच्छे से सेटिस्फाइड हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस लेक्चर नाउ. ओके, वी विल स्टॉप हियर नाउ, बट बिफोर वी कंप्लीट लेट मी गिव यू सम होमवर्क फॉर टुडेज लेक्चर. Let me give you the homework. Yeah, we discussed this portion and this conversation between Umberto Eco and Mukund. Okay, so your today's homework is you have to mention the conversation between Mukund and Umberto Eco. What is the question asked by Mukund and the reply by Umberto Eco that you have to describe in brief. Up to the portion we have discussed. हमने जितना डिस्कस किया है उतना ही पोर्शन आपको मेंशन करना है, पूरा का पूरा आप मेंशन नहीं करोगे तो चलेगा. Okay students, I hope that you could understand. Yeah, suppose you find any difficulty then you are free to ask me every time. Take care of your health students, because that is also important nowadays. Okay, so thank you students, have a nice day.